Hi guys, welcome to lecture 2 of our reading based on Vijay Joshi, wherein we are discussing a snapshot of what has happened since independence till let's say 2015. So इस पूरे period को we have divided into two major parts based on what kind of reforms were happening and in terms of GDP growths as well. So first period was till 1980s. सो जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है अपने फर्स्ट लेक्चर में. सो नाउ अब हमारा एजेंडा है 1980 से लेके 2014 2015 तक क्या सिचुएशन रही है उस चीज को एनालाइज करना. सो अब उस चीज में हमारे तीन मेजर डिस्कशंस रहेंगे कि आफ्टर 1980s व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिनेरियो, पॉलिटिकल लैंडस्केप किस तरीके का था. आफ्टर दैट वी ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड इकोनॉमी किस तरीके से परफॉर्म कर रही थी. And also, we want to see what happened to poverty measures, what happened to inequality. Poverty improve hui, inequality बढ़ी, कम hui, these things, right? So, poverty and inequality. तो ये तीन मेजर एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम लोग स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम लोग पॉलिटिकल लैंडस्केप के बारे में बात करना शुरू करेंगे बिकॉज दैट इज हाउ economy is also based on what kind of policies people are performing or people are implementing. So 1980s से लेके उसके बाद के पीरियड में पॉलिटिकली क्या हो रहा था, दैट इज समथिंग दैट वी वांट टू डिस्कस. ठीक है. तो अगर हम लोग स्टार्ट करें, वी स्टार्ट विद लेट्स से अ पीरियड ऑफ 1980s टू 1984. इस दौरान इंदिरा गांधी अगेन केम टू पावर अगेन. सो इंदिरा गांधी रिटर्न टू पावर. बट उस वक्त पे इंडिया was facing a lot of challenges economically in terms of we were facing droughts were very common during that period. We were also facing oil price shock. Oil prices काफी high हो रहे थे in the world market, जिसकी वजह से obviously inflation is affected. एंड ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमी के टर्म्स में अगर बात करें तो मैक्रो इकोनॉमी वाज इन टर्म्स ऑफ क्राइसिस. फिस्कल डेफिसिट भी काफी हाई था. लॉट ऑफ दीज थिंग्स वर देयर. सो उस पीरियड ऑफ टाइम पे देयर वाज एक्सपेंशनरी पॉलिसीज. expansionary policies which were being implemented. मतलब lot of government spending was happening also with the assistance of IMF loan. तो इस दौरान पब्लिक इन्वेस्टमेंट काफी ग्रो कर रही थी. Public investment was growing a lot, but obviously if you are doing some investment by taking loan from outside, it's going to worsen your fiscal position. So your fiscal position was getting worsened. And इसी दौरान politically there was पंजाब में सेपरेटिस्ट मूवमेंट की स्टार्ट हो चुकी थी. एंड इसी दौरान अगर इफ यू रेड अबाउट इट और इफ यू सीन इट इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स, इसी दौरान पे गोल्डन टेम्पल जो है मिलिटेंट्स हैड made it their headquarters inside the golden temple. So this was stormed. Basically the government ordered कि उन सबको वहां से निकाला जाए. And after that particular incident, lot of riot like situation was very prevalent in Punjab. ठीक है. So that was also during a period of 1984. So during this period of time, this was happening. Golden Temple.
was stormed in Amritsar. And within this period also, if you remember, so because of all these escalations that were happening, people were not very happy with what was happening at the level of the government, how the situation was being handled. तो 1984, अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी जी को जो उनके खुद के बॉडीगार्ड्स थे, उन्होंने ही उनको मार दिया. So she was assassinated by her own bodyguards. October 1984 by her own bodyguards. So when all of this was happening, obviously the government will have to be formed again. She was the prime minister at that point of time. तो गवर्नमेंट दोबारा से बनने लगी. सो इस पीरियड के बाद 1984 से 1989 के पीरियड में इंदिरा गांधी सन राजीव गांधी came into power. Because there was a lot of sympathy in terms of because of the killing of Indira Gandhi. काफी माहौल इस तरीके का था कि people were sympathizing with that, and because of that a lot of people supported Congress party as well. So Rajiv Gandhi came into power. So he was a young leader at that point of time. So initially, he had a lot of ideas regarding how to reform the government. He was also pro-liberalization and modernization of the economy. So initial periods of time में इस तरीके की policies implement हुई, but uh, then some allegations started to happen. So 1987 के टाइम पे there were allegations of corruption in the Bofors deal. Allegations of corruption started coming into picture, especially related to Bofors deal in 1987. And at that point of time there was lot of agitation. काफी टेंशन का माहौल चल रहा था पूरी कंट्री में because of the बाबरी मस्जिद issue as well. So there was agitations going on over Babri Masjid issue, and these were mainly led by BJP. तो बिकॉज इस तरीके के पॉलिटिकल डिफरेंसेस आने लग गए थे, काफी एलिगेशंस भी लग रहे थे गवर्नमेंट के, तो जो इनिशियल जो उनके पॉलिसीज थे ऑफ मॉडर्नाइजिंग एंड लिबरलाइजिंग, दे टुक अ बैक सीट एंड द होल फोकस वाज इनटू रिजॉल्विंग ऑल दीज पॉलिटिकल डिफरेंसेस दैट वर गोइंग ऑन. सो that is essentially what happened during that particular term. So उसके बाद जब 1989 में दोबारा से इलेक्शंस हुए, so after this 5-year period when elections happened again, so Congress party did not come to power. And what really happened at that point of time, so अगर आप उस समय की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करो, बिकॉज उसी के बेसिस पे जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं डिटर्मिन होते हैं, तो उस वक्त पे देयर वाज इराक्स इन्वेजन ऑन कुवैत, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस काफी डिस्टर्ब हुए, ऑयल प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गए थे. फिस्कल क्राइसिस what was also going on because of all these reasons.
And apart from that, at that period of time, there was a implementation of Mandal Commission. Mandal Commission recommendation were implemented. और मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन क्या थी कि हर गवर्नमेंट जॉब या जो भी जहां पे भी रिजर्वेशन है 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलना चाहिए. सो these recommendations were being implemented, जिसकी वजह से there were lot of caste based conflicts also going on at that point of time. Caste based conflicts were going on. सो 1989 के टाइम पे इस तरीके की सिचुएशन चल रही थी, तो कांग्रेस पार्टी डिड नॉट केम इनटू पावर. एंड यू नो तो जो 1989 में इलेक्शन हुए थे उसमें नेशनल फ्रंट, विच वाज अ कोएलिशन, जो कि काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कोएलिशन था, जिसको नेशनल फ्रंट बोला गया था, विच वाज लेड बाय वीपी सिंह. एंड दे फॉर्म्ड अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट. ठीक है. सो ये सब जो भी चीजें चल रही थी, इसके बाद बीजेपी ने अपना जो है सपोर्ट टू नेशनल फ्रंट विड्रॉ कर लिया, जिसकी वजह से वीपी सिंह की गवर्नमेंट जो है वो गिर गई, सरकार गिर गई. सो उसके बाद क्या हुआ? बीजेपी's withdrawal of support led to collapse of VP Singh's government. So until May 1991, माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स ही रही. ठीक है. एंड इसी दौरान जब नए इलेक्शंस, दोबारा से इलेक्शंस की तैयारियां हो रही थी, तो ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन्स राजीव गांधी वाज also assassinated during election campaigns. All of this was going on. So एक तरफ से करप्शन चार्जेस, एक तरफ से बाबरी मस्जिद, राम मंदिर इशू was going on. The recommendations of Mandal Commission were also being implemented, which is why people were so there were caste based conflicts also going on. गवर्नमेंट भी उतनी स्टेबल नहीं बन रही थी, कोएलिशन गवर्नमेंट्स बन रही थी, कोई अपना सपोर्ट विड्रॉ कर रहा था. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगेन राजीव गांधी वाज अगेन assassinated. इंदिरा गांधी वाज assassinated बिफोर, पहले उस टाइम पे पंजाब में कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी. सो यू इमेजिन व्हाट वाज गोइंग ऑन. some or the other conflict was going on, whether it was religion based, caste based, all these kind of things were going on. ठीक है. सो अब इसके बाद what happened? सो अब 1991 का पीरियड आ चुका है. अब आपको सबको ही बहुत ही क्लियरली 1991 वाज the period of LPG liberalization, privatization and globalization. So now comes into picture the liberal policies. तो उस वक्त पे क्या हुआ? So 1991 में कांग्रेस जो है, कांग्रेस अगेन केम इनटू पावर. Congress party again came into power. They formed a minority government under the leadership of P.V. Narasimha Rao. And during that time, Dr. Manmohan Singh was the finance minister at that point of time. And they basically initiated the economic reforms
under their leadership, economic reforms were initiated. So what was the reason for all those economic reforms? Just imagine the situation of the economy at that point of time. तो अगर उस वक्त की बात करें, inflation was 12%. 12% inflation was going on. Fiscal deficit की अगर बात करो, 10% of GDP. This was the fiscal deficit. अगर हम लोग एक्सटर्नल डेट मतलब बाहर से जो हमने कर्जा लिया हुआ है, एक्सटर्नल डेट टू एक्सपोर्ट्स रेशियो अगर हम लोग देखें कि हम बाहर कितना एक्सपोर्ट करते हैं, कितना वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट करते हैं एज कंपेयर टू द डेट दैट वी हैव. सो 100 रुपए का मान लो डेट है, कर्जा है, 20 रुपए का अमाउंट हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो द रेशियो इज 5. सो इमेजिन व्हाट वाज द रेशियो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो दैट रेशियो वाज 250%, which was huge. So this was the state of the economy at that point of time, and we did not have enough. We were basically having, apart from all these things, we were also facing a foreign exchange crisis. कि जो हमारे essential imports हैं उसके लिए हमारे पास उनके import के लिए भी हमें हमारे पास foreign reserves नहीं बचे कि हम लोग payments कर सकें जो भी हमारे essential imports हैं, especially oil. So then we definitely had to take and seek help from outside. So IMF came into picture to help us, to provide us loan. But those kind of loans, came with certain conditions that you'll have to open up your economy. You'll have to reduce the tariffs on imports. You'll have to follow a set of policies which will not let you come into this position again. So that was again a new wave of transformation or changes in terms of economic policies, right? So we had to devalue our currency also. So stabilization program started, was introduced, and we had to devalue rupee. Rupee was devalued. At that point of time, हम लोग fixed exchange rate. So we were maintaining the exchange rate. The government was maintaining the exchange rate. हम लोग वो rule follow करते थे. So rupee was devalued with the support of IMF. With IMF support. So what happened कि आप liberalization policies implement कर रहे हो, fiscal डेफिसिट इतना बढ़ चुका है तो आप फिजिकली थोड़ा चीजें कंट्रोल कर रहे हो जिसकी वजह से ग्रोथ उस वक्त पे डिक्लाइन हो रही थी, बट लेटर ऑन इट रिकवर्ड. ठीक है. सो अगर मोर और लेस अभी तक की बात की जाए, लेट्स से 1980s से लेके जो 1993 तक की अगर बात की जाए, तो हमारी ऑन एन एवरेज ग्रोथ रेट averaged at growth rate averaged at 5.2% annually. And if you compare it with pre-1980s era, it was averaged at last 30 years before. So basically, let's say 1950 to 1980s, this growth was 3.5%. So there was improvement going on after that period, despite a lot of political instability, religious conflicts, caste-based conflicts going on at different places in the country. तो एंड इस दौरान जो है हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं दे ऑल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग अप. इन्वेस्टमेंट्स जो है दे ग्रू टू 21% ऑफ जीडीपी. ठीक है. So liberalization was happening, but little hesitant liberalization. धीरे धीरे liberalization was happening. ठीक है. So that was a period till, let's say, on an average economic performance किस तरीके की रही वो हमने देखा. तो अब अगर हम लोग बात करें तो हमने पॉलिटिकली कहाँ तक पूरी सिचुएशन देखी कि 1991 के बाद पॉलिसीज स्टार्टेड गेटिंग इम्प्लीमेंटेड. And PV Narasimha Rao was the prime minister under being
डॉक्टर मनमोहन सिंह बीइंग द फाइनेंस मिनिस्टर. सो उसके बाद जो 1991 से 95 तक का पीरियड उनकी गवर्नमेंट चली. उसके बाद 1996 से लेके 1999 की अगर हम लोग बात करें, सो दैट वाज द टाइम व्हेन बीजेपी started rising and started coming into picture. So there was a rise in BJP's popularity. So what happened 1996 में जो इलेक्शंस हुए थे, बीजेपी वॉज द सिंगल पार्टी जिनने सबसे ज्यादा सीट्स गेन की थी. सो दिस वाज बीजेपी वॉज द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी. बट इनके पास मेजोरिटी नहीं थी. बट नो मेजोरिटी. मेजोरिटी नहीं थी तो ऑब्वियसली दे फॉर्म द गवर्नमेंट विद द हेल्प, कोएलिशन गवर्नमेंट रही. बट दे वर शॉर्ट लिव्ड. सो उसके बाद मतलब वो ज्यादा लंबे पीरियड तक नहीं चली. उसके बाद 1998 में फिर से इलेक्शन हुए. बीजेपी ने जितनी सीट्स यहाँ पे ली थी उससे ज्यादा सीट्स मिली उनको. सीट्स उनकी बढ़ गई. एंड देन दे formed a government, and Atal Bihari Vajpayee ji was the prime minister at that point of time. And if you remember, a major event that happened during this period was the nuclear testing, successful nuclear testing that happened in Pokhran. But this government also did not last. It was not a majority government, not a majority. नहीं थी, majority government नहीं थी. तो this also did not last too long. तो उसके बाद 1999 में फिर से इलेक्शन हुए. Again, elections happened. उसके बाद बीजेपी was the single most party and they also had a majority. So they formed a stable government. स्टेबल गवर्नमेंट रही 1999 से लेके 2004 तक की. सो जो पॉलिसीज थी लिबरलाइजेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की, प्राइवेटाइजेशन की, दे कंटिन्यू ड्यूरिंग दिस पीरियड. ठीक है. बट देयर वाज अ स्लाइट चेंज ड्यूरिंग दिस पीरियड. सो 1999 से लेके 2004 तक एक स्टेबल गवर्नमेंट रही फ्रॉम बीजेपी. ठीक है. सो इनको एनडीए अलायंस भी बोलते थे. एनडीए. ठीक है. अच्छा. अब इसी बीच 2002 में देयर वाज अ इंसिडेंट, गोधरा इंसिडेंट, दैट हैपेंड. तो what was happening, there was a train which was coming from Ayodhya to Ahmedabad, and there's a place in Godhra where the train was supposed to stop in the month of February 2002. There was a particular coach of the train was set on fire, and I think around 59 people died. 59 people died, and most of them were Hindus. All of them were Hindus. एंड द एलिगेशन वाज कि ये आग लगाई गई थी, जिसकी वजह से व्हाट हैपेंड कि एक रेलवे कैरेज को आग लगा दी गई. एक पर्टिकुलर कोच को आग लगा दी गई जिसमें 59 पीपल, लोगों की डेथ हो गई, जिसमें कुछ बच्चे भी थे, फीमेल्स भी थी, मेल्स भी थे. तो अब जिसके बाद यू नो देयर वर कम्युनल राइट्स विच स्टार्टेड हैपनिंग इन गुजरात. और ये राइट्स की वजह से मोर देन 2000 डेथ्स हुई ओवरऑल, जिसमें मेजॉरिटी मुस्लिम डेथ्स थी एंड सम ऑफ द डेथ्स वर फ्रॉम द साइड ऑफ हिंदूज एज वेल. एंड द मेजर क्रिटिसिज्म दैट वाज दैट द गवर्नमेंट वाज अंडर, कि गवर्नमेंट ने चीजों को अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं किया. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बीजेपी गवर्नमेंट वाज देयर इन गुजरात. सो काफी क्रिटिसाइज किया गया बीजेपी को because of the way they were handling the incident at that point of time. So लोगों का claim था कि police was also not supporting. They just stood by, they did not do anything, and it was all a planned attack. इस तरीके के claims थे. ठीक है. तो बीजेपी की जो स्टेट गवर्नमेंट थी उस टाइम पे गुजरात में, दैट वाज हाईली यू नो criticized for the way they handled the right.
So because of that, there was some loss in the popularity of बीजेपी which they were gaining at this period of time. तो अब उसके बाद फिर से 2004 में इलेक्शंस आने थे। तो 2004 में जो इलेक्शन थे, बीजेपी हैड देयर कैंपेन इंडिया शाइनिंग, बट दे लॉस्ट द इलेक्शंस बिकॉज ऑफ ऑल द इंसिडेंट्स दैट वर गोइंग ऑन। सो बीजेपी लॉस्ट एंड कांग्रेस पार्टी, ऑब्वियसली विद अलायंस, जिसको हम लोग यूपीए वन बोलते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए, कांग्रेस being the majority party there, this was a coalition, came into power. And came into power, and Dr. Manmohan Singh became the prime minister. एंड अगर उस वक्त पे इकोनॉमी की बात की जाए, तो द होल इकोनॉमी वाज मूविंग वेरी फास्ट, द होल वर्ल्ड वाज आल्सो मूविंग एट अ वेरी फास्ट पेस, सो ग्रोथ रेट वाज अबाउट 8.5% एनुअली ड्यूरिंग यूपीए वन। और जो रिफॉर्म्स पहले इनिशिएट किए गए थे, वो अब बेनिफिट्स रीप कर रहे थे। ठीक है, सो रिफॉर्म्स स्टार्टेड बिकमिंग हाईली बेनिफिशियल। बट उस पॉइंट पे फिर 2008 में देयर वाज ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस व्हिच केम इनटू पिक्चर, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट जो है वो 8.5 से 6.7% पे ड्रॉप हो गई। But it rebounded quickly because India was not very much financially इतना included नहीं था, and we had our own way of dealing with things. We were not very much connected uh, with the rest of the world in terms of investment. So हम थोड़ा सा insulated ही थे because of the global financial crisis. All the economies were going into recession, but the similar thing was not happening in India. ठीक है, तो ये हुआ। अब उसके बाद दोबारा से 2011 में इलेक्शन हुए, फिर से यूपीए की सरकार आई, कांग्रेस अगेन केम इनटू पिक्चर, बट ग्रोथ वाज स्लो, 5%, and inflation was very high. And then during this period, there were a lot of corruption scandals that started coming into picture. बहुत सारे corruption scandal, Colgate scam, Spectrum scam, multiple scams came into picture. तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि एक तरीके से गवर्नमेंट एक पॉलिसी पैरालिसिस की सिचुएशन में चली गई थी। फाइल्स वर नॉट मूविंग, काम ही नहीं हो रहा था, and one after the other new scams were coming into picture. So corruption scandals and policy paralysis. And at that point of time, you remember, there was uh, Anshan, Anna Hazare, Arvind Kejriwal against corruption also. So that, so 2011 से लेके वो पीरियड उसी तरीके का था। 2014, 2011, 12 वो पीरियड था जब करप्शन को लेके लोग काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। उसके बाद 2014 के इलेक्शन में बीजेपी, अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, so they campaigned not on anything else, but rather, on leadership and governance. गवर्नेंस के बेस पे उन्होंने पूरा इलेक्शन लड़ा, यूथ को काफी सेंटर में रखा इस पूरे इलेक्शन में। दिस इलेक्शन आई ऑल्सो फॉलोड बिकॉज I was also in my class 11 at that point of time, so we were also very actively
looking at the news all the time during this period. And we were also following actively the Anna Hazare का जो अनशन चल रहा था उस वक्त against corruption. Everybody was just glued to television sets at that point of time. So BJP came into power at that point of time, and they had a majority in Lok Sabha. Although in Rajya Sabha they had a minority, but Lok Sabha में उनके पास majority थी. एंड उसके बाद क्या हुआ वो तो आप जानते ही हो, 2014 से 2019, 2019 से लास्ट ईयर तक, एंड नाउ ऑल्सो द बीजेपी गवर्नमेंट इज कंटिन्यूइंग. This is what is happening. ठीक है. So this was the political situation which happened over different periods of time starting 1980s. ठीक है. So क्या किस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही थी, कौन कौन पावर में था, किस किस तरीके के मेजर प्रॉब्लम्स फेस हो रहे थे, all of this was going on. ठीक है. So politically this is the landscape, this was the landscape that was available and into picture from 1980s till let's say 2015. This was happening. So अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन रहेगा कि हम लोग इकोनॉमी को इन डिटेल देखें कि इस पूरे पीरियड में इकोनॉमी किस तरीके से परफॉर्म कर रही थी. Right now the focus was more on political events that were going on, and then we'll also get into what really happened in terms of poverty reduction and inequality at during this period of 1980s to 2015 and 2014. Okay, so that we'll do in the next session for this. Thank you so much.